There's also a face-off brewing between the BJP as well as the Aam Aadmi Party over the athlete Divya Kakran, who won a medal at the Commonwealth Games, but is now at the centre of a row between these two parties, where the BJP has accused the AAP of betraying the concerned athlete Divya Kakran and alleged that despite living in Delhi over the last 20 years, the Arvind Kejriwal government has not offered her any kind of assistance or any financial reward. Let's listen into that reaction coming in from the BJP. If there is one party that always relishes in insulting those who raise the honor of our tricolor, be it the Jawan or be it the Khiladi, it is the Aam Aadmi Party. पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दिव्या काकरन ने 2018 में भी जब देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के कार्य किए थे, देश को गौरवान्वित किया था और उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के समक्ष ये बात रखी थी कि वैसे तो हमारा स्वागत सत्कार किया जाता है जब हम मेडल जीत जाते हैं, परंतु जब हम सहायता मांगते हैं, जब हमें समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, व्हेन वी नीड द हेल्प द मोस्ट, आप तो फोन भी नहीं उठाते। 2018 में भी जो बातें उन्होंने कही थी और आज वही वस्तु स्थिति आज भी है। ये 2022 में भी जब उन्होंने पदक जीता तब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात रखी कि 2018 में भी यही स्थिति थी और 2022 में भी कांग्रेचुलेशन मैसेज तो आ गए, परंतु जो समर्थन मिलना चाहिए था, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए जो चीजें उपलब्ध करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, वो नहीं हुई। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटी, हमारी बहन अगर सच बोल दे तो उन पर पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हावी हो गया, इस प्रकार से उनको ह्यूमिलिएट, इस प्रकार से उनको बेइज्जत, इस प्रकार से उनके ऊपर लालछन लगाना, और वो भी किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, जो कि एक विधायक है, केजरीवाल के बहुत क्लोज जो उनकी कोटरी है उसमें है। वो आते हैं और कहते हैं हमारी बहन से, हमारी बेटी से, इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला से, खिलाड़ी से, तू दिल्ली से है, मुझे तो लगा तू उत्तर प्रदेश से है। This was the same modus operandi of the Aam Aadmi Party to demand the sabut from our jawans when surgical strike happened. Divya Kakran had won the bronze medal for India at the Commonwealth Games in Birmingham. This is what she had to say. कहना चाहती हूँ कि अभी तो आपने इतने कर दिए हैं, पर लेकिन जब एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था तब भी कुछ भी नहीं हुआ था मेरे लिए। और दूसरा, जिस प्रतिशत में आज यहाँ पे आई हूँ तो बहुत मुश्किल है। आज तो आप कर रहे हो, पर लेकिन जो गरीब बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे। आज तो आपने सबको हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, आपने हमें कांग्रेचुलेशन बोला है, पर लेकिन जिस वक्त हमें ज्यादा जरूरत रहती है ना, उस टाइम पे हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है। क्योंकि आज तो मैं यहाँ पे बैठ गई, आज आप कम कर दीजिए हमारे लिए, पर लेकिन जिस टाइम पे ज्यादा जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। Let me go across to Mohit Bhatt for more. Mohit, the accusation against the AAP in this particular instance is that they try to palm off responsibility despite Divya claiming that she had represented Delhi and not Uttar Pradesh for a long period of time, as the Aam Aadmi Party had claimed. Well, yes, this has blown out, Siddharth, to a massive controversy with the BJP attacking the Aam Aadmi Party, saying that they have money to spend on all the other things, but they are not giving out money to the sportsperson who have brought laurels and medals for the country, and who have made sure that our flag is there at the podium in every event they go. Now, today, the BJP also addressed a press conference, and they stated that this has been the Aam Aadmi Party's nature, that whenever our army does a surgical strike, they ask for a proof. If a wrestler brings a medal for the country, they say that you don't play for Delhi, you play for Uttar Pradesh. And he was referring to the tweet by Saurabh Bhardwaj when Divya Kakran said that I have been living in Delhi for 20 years, and she referred that tweet to Arvind Kejriwal.
Kejriwal, saying that I need something so that we get energized for it. And she also asked that she has not been provided by any monetary amount by the Delhi government. To which Saurabh Bhardwaj stated that you have been playing for UP for a long time. You should ask the UP government for any prize if you want. So clearly that has blown out into massive politics, while the BJP says that this has been the nature of the Aam Aadmi Party, that if army does a surgical strike, they ask for the proof. If a sports person brings laurel for the country, they ask for the proof of their citizenship. Every time they do this. And the BJP also says the athlete or a sports person does not belong to any particular state. They belong for the country. If they bring medal for a country, it's for the country, not for a particular state. And that is where we have seen that how they have hit out. And now we have to wait and watch how exactly this political controversy will go, because Divya Kakran will also address a press conference today at around 4:30 p.m. in Delhi. So we have to wait and watch what exactly she has to say. But yes, the politics is also blowing up on this particular issue, and we have to also wait and watch how will Aam Aadmi Party respond to the charges that have been made by the Bharatiya Janata Party. And Divya Kakran was in fact prompted, Mohit Bhatt, to issue a certificate that she represented Delhi between the years 2011 and 2017 at the National Women's Championships. We'll slip into a short break. We'll come back with more on the other side. Stay tuned.